Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today we will do one more 8 marker question for the topic YED. It would be a similar question, मिलता जुलता होगा लेकिन फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है. So let's start with one more question for YED. So this is question number 2, part A. Question is analyze using analyze using income. Question is analyze using income elasticity of demand. Explain how explain how an increase in explain how an increase in income will affect how an increase in income will affect quantity of normal and inferior goods. 8 more. Okay, so your question is analyze using income elasticity of demand. Explain how an increase in income will affect quantity of normal and inferior good. Okay, so let's talk about the marks distribution. So in an 8 marker question, we get 3 marks for knowledge. We get 3 marks for analysis. And we get 2 marks for evaluation. Okay, in an 8 marker question, we get 3 marks for knowledge, 3 marks for analysis and 2 marks for evaluation, right? 3 mark knowledge, 3 mark analysis और 2 mark आपको evaluation के मिलेंगे. So if I want the mark for knowledge, so what definitions can I give? I can tell what is YED and its formula. मैं YED डिफाइन कर सकता हूँ, इसका फॉर्मूला बता सकता हूँ. और क्या बताऊंगा, 2 गुड्स बता सकता हूँ उसको मैं. कौन कौन से डिफाइन करूंगा? नॉर्मल गुड्स. और क्या डिफाइन करूंगा बेटा? और मैं डिफाइन करूंगा इंफीरियर गुड्स. तो ये यहाँ तक मुझे नॉन नॉलेज के 3 मार्क मिल जाएंगे. यहाँ तक मुझे नॉलेज के 3 मार्क मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? मैं पहले वाईडी बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, नॉर्मल गुड क्या होता है, इंफीरियर गुड क्या होता है. यहाँ तक मुझे नॉलेज के नंबर मिल जाएंगे. फिर मुझे 2 डायग्राम्स बनानी होंगी, प्लस उन 2 डायग्राम्स को एक्सप्लेन भी करना होगा ना. मुझे 2 डायग्राम बनानी है और उन दोनों डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होगा. सही है. एक्सप्लेनेशन बतानी होगी कि नॉर्मल गुड्स है, उसमें इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा. तो बेटा नॉर्मल गुड में इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. और क्या करना पड़ेगा? और इसको बताना पड़ेगा कि अगर वो गुड इंफीरियर गुड है, अगर वो गुड इंफीरियर गुड है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड गिर जाएगी. ठीक है. और उसके साथ साथ मुझे कंक्लूजन देनी होगी. और कंक्लूजन कितने मार्क्स की? कंक्लूजन 2 मार्क्स की. राइट. सो दिस इज योर मार्किंग स्कीम. कंक्लूजन जो लास्ट क्वेश्चन था उससे बिल्कुल सिमिलर है, सेम टू सेम. ठीक है. तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट राइटिंग दिस आंसर. स्टार्ट करें इस आंसर को. चले आए. फर्स्ट वी हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज YED. तो मुझे जरा बताएं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि इनकम के चेंज की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा. तो मैं इधर लिखूं, इनकम
इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures responsiveness, income elasticity of demand measures responsiveness of percentage percentage change in quantity demanded, of percentage change in quantity demanded due to due to percentage percentage change in income, right? The formula is formula क्या होगा? फॉर्मूला है वाई ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज change in quantity demanded upon percentage change in income, right? This is your formula. Right now I have to define what is normal good, what is inferior good. So if you guys remember, सर नॉर्मल गुड क्या होता है? नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी होता है, ब्रांडेड होता है, एक्सपेंसिव होता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा दूंगा, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। ओके, तो नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज नॉर्मल गुड्स। तो मुझे बताएं जरा। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स which are high quality. Normal goods are those goods which are high quality, comma branded and expensive. Normal goods are those goods which are high quality, comma branded and expensive. An increase in income an increase in income will increase its demand, and a decrease in income and a decrease in income will and a decrease in income and a decrease in income will reduce its demand, comma creating a positive relationship, comma creating a positive relationship. So, so forming and forming an upward sloping demand curve, right? So forming an upward sloping demand curve. So whenever YED is positive, it is a whenever YED is positive, it is a normal good, right? So this is the knowledge part. Okay, now we will make a diagram and we will show how an increase in income will affect quantity of normal good. Now we will make a diagram and we will show how an increase in income will affect normal good. So let's make the diagram. First of all, we have to do the labeling. तो ऊपर एक्सेस पे मैंने लिख दिया इनकम, राइट, और नीचे एक्सेस के ऊपर मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स। ऐसा ही है सर, इनकम और नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन, इस वजह से डिमांड कर्व बनेगा अपवर्ड। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ये एक इनकम हो गई और ये एक क्वांटिटी हो गई। अब आप देखें, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा, देखें इधर, ये इनकम वाई हो गई
ये पॉइंट ए हो गया, ये क्वांटिटी क्यू हो गई। अब आप देखें, इनकम वाई से वाई वन के ऊपर बढ़ रही है और क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर बढ़ रही है। ऐसा ही हो रहा है, देखें आप, जब आपकी इनकम वाई से वाई वन के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर इंक्रीज हो रही है। और ये देखें आप, इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है किसके ऊपर, ए से बी के ऊपर। ऐसा ही है, ठीक लिखा है मैंने? ओके। अब मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, राइट। मुझे इसको बताना है सवाल के मुताबिक कि अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन इंक्रीज इन इनकम, एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम वाई टू वाई वन, एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम वाई टू वाई वन will extend quantity of will extend quantity of normal goods from Q to Q1, comma causing causing movement from point causing movement from point A to B। ऐसा ही है, as shown in diagram नंबर वन, राइट। क्लियर? तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया फॉर नॉर्मल गुड, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सेकंड पैराग्राफ। ओके, सो नाउ we will move towards inferior good, right? Okay, so if you guys remember, आपको याद होगा, inferior goods वो goods होते थे जो लो क्वालिटी होते हैं, नॉट ब्रांडेड होते हैं और चीप होते हैं। इनकम बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। That's why there is an existence of negative relationship and that is why we form a downward sloping demand curve, right? So let's start. Inferior goods, inferior goods are those goods, inferior goods are those goods which are low quality. Inferior goods are those goods which are low quality, comma not branded and cheap. An increase in income, an increase in income will reduce its demand. An increase in income will reduce its demand and a decrease in income and a decrease in income will increase its demand, comma there is existence of there is existence of negative relationship, there is existence of negative relationship to a downward sloping demand curve is formed, and whenever whenever YED is negative,
and whenever YD is negative, it is an inferior good. तो देखिए हमें नॉलेज वाला मार्क मिल गया। अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इससे इंफीरियर गुड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब हमें इसको बताना क्या है, हमें इसको बताना है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा और लेबलिंग करूंगा। लेबलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर मैंने लिख दिया इनकम और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड, राइट। तो बताएं जरा, इनकम और इंफीरियर गुड्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशन, दैट इज व्हाई वी हैड मेड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट। ये एक इनकम हो गई, जहां टच होगा वहां से क्वांटिटी आ गई। ये देखिए आप, इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, ऐसा ही है। इनकम बढ़ रही है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये हो गया वाई, ये हो गया पॉइंट है, ये हो गया क्वांटिटी क्यू। अब आप देखें जैसे इनकम बढ़ी, जैसे इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी कम हो गई और मूवमेंट हो गई ए से बी पे। देखें जैसे इनकम वाई से वाई वन पे बढ़ रही है, जैसे ही इनकम वाई से वाई वन पे बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन के ऊपर कम हो रही है और ये ए से बी के ऊपर क्या हो रही है, ए से बी के ऊपर मूवमेंट हो रही है, ऐसा ही है। अब मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम वाई टू वाई वन, एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम वाई टू वाई वन will contract will contract quantity of will contract quantity of inferior goods from Q to Q1, causing movement from point A to B as shown in diagram below। ठीक है, यहाँ तक मुझे नॉलेज और एनालिसिस के सारे मार्क मिल गए। अब मुझे कंक्लूजन लिखनी है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट। ओके, so let's start with conclusion. To conclude, in my opinion, an increase in income will increase or decrease demand, will increase or decrease demand depends upon economic condition of the country and also income of individuals, as it is beyond the control of business, right? So is it clear? Comma, spending also depends on taste and preferences, taste and preferences which are changing, very rapidly. So is it clear, guys?
Let me know if this 8 marker question is clear to everyone.